Hello dear students, welcome to Vision Pharmacy. In our today's video, we are going to talk about probability sampling and non-probability sampling. So before we begin with our today's video, please do like, share, subscribe and press the bell icon for getting updates on upcoming videos. Let's begin dear students. So let us talk about what is meant by probability sampling. So basically, in probability sampling, every member of the population has a known and equal chance of being selected. इट मीन्स दैट पॉपुलेशन में जितने भी लोग हैं सभी लोगों का सिलेक्ट होने का इक्वल चांस है राइट इट रिलाइज ऑन randomization to ensure that the sample is representative of the population and probability sampling is more structured, reliable and scientific. Here आप सभी को ये समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे जो भी पॉपुलेशन है पॉपुलेशन में सभी को सिलेक्ट होने का इक्वल चांसेस है और ये मेथड रैंडमाइजेशन टेक्निक्स पर काम करता है. साथ ही में प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड, रिलायबल और साइंटिफिक मेथड है. अब हम बात कर लेते हैं इसके एडवांटेजेस की. तो बेसिकली इट प्रोवाइड्स अ रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल, देन रिजल्ट्स आर जनरलाइज्ड टू अ लार्जर पॉपुलेशन एंड रिड्यूसेस सिलेक्शन बायस. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट डिसएडवांटेजेस, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस ऐसे हैं कि सबसे पहला ये कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग मेथड है और दूसरा इट रिक्वायर्स अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ द population. Moving to next, that is non-probability sampling. So basically in non-probability sampling, not every member of the population has an equal chance of being selected. The selected process is subjective or based on convenience rather than random selection, and it is easier, quicker and cheaper. नॉन प्रोबेबिलिटी में आपको यह समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे जो भी मेंबर्स हैं सभी के सिलेक्ट होने के इक्वल चांसेस बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है, ये जो प्रोसेस है वो सब्जेक्टिव प्रोसेस है और ये कन्वीनियंस पर डिपेंड है, मतलब जिसे सिलेक्ट करने में कन्वीनियंस जो आसानी से हो जाए. ठीक है, यहाँ पे कन्वीनियंस कंसिडर किया जाता है और ये एक ईजियर, क्विकर और चीपर मेथड है कंपेयर टू प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. इसके एडवांटेजेस ऐसे हैं. फर्स्ट वन, मोर कॉस्ट इफेक्टिव एंड क्विकर देन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. राइट, अपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से सिलेक्ट किया हुआ है जिसके वजह से ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव भी है और क्विकर भी है. ऑल्सो यूजफुल फॉर एक्सप्लोरेटरी टाइप ऑफ रिसर्च वेयर द कंप्लीट लिस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज नॉट अवेलेबल. अब इसके हम डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं. डिसएडवांटेजेस, फर्स्ट वन इज रिजल्ट्स में नॉट बी रिप्रेजेंटेटिव लीडिंग टू सिलेक्शन बायस. ठीक है, यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पे हमने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स को रखा हुआ है. राइट, तो अल्टीमेटली जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट में बी बायस. एंड सेकेंड इज लिमिटेड एबिलिटी टू जनरलाइज फाइंडिंग टू द एंटायर पॉपुलेशन. मतलब इस केस में हमारा जो भी फाइंडिंग है हम उसे ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि पब्लिक ओपिनियन है. राइट, बिकॉज वी कैन नॉट जनरलाइज इट, वी कैन नॉट make it like opinion of public, right, or opinion of the population, because we are selective, we have selected based on our convenience. Right, now let us understand the difference between the probability and non-probability type of sampling. तो first point is selection method. तो as we have already seen, यहाँ पे in probability sampling there is random selection of participants, whereas नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जो सिलेक्शन होता है दैट सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन कन्वीनियंस और जजमेंट. देन व्हेन वी टॉक अबाउट चांस ऑफ सिलेक्शन, तो इन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एवरीवन हैज इक्वल चांस टू बी सिलेक्टेड, whereas नॉन प्रोबेबिलिटी में देर इज नो इक्वल chance for everyone of getting selected. Right, when we talk about the third point, that is bias, so in probability sampling it is less bias and more accurate, whereas non-probability sampling it is more bias and less accurate. Right, then the next point, that is representativeness. Right, so representative, that is representing the population. ठीक है, पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करना. तो फिर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इट इज बेटर रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन, whereas non-probability sampling may not represent the population well. Right, because here it is based on selection and judgment. Then the next is, that is generalizability. So here results can be generalized to entire population. We can say that whatever is the result, that is
as per the opinion of the entire population, right? Because here we have selected the population randomly, whereas in non-probability sampling, result may not be generalized. Then the next point, that is types of probability sampling, include random, or we also call it as simple random, then stratified, systematic, and cluster, right? So these are all types of probability sampling. I am also going to prepare a separate video which is going to explain each of these type of sampling in detail. Whereas the various types of non-probability sampling include convenience sampling, judgmental sampling, quota sampling, and snowball sampling. ओके, तो ये चार हो गए नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के तरीके. अब बात कर लेते हैं कॉस्ट की. तो बेसिकली जो हमारा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है वो मोर एक्सपेंसिव होता है एंड ऑफन इट रिक्वायर्स अ मोर टाइम, राइट? इट इज मोर टाइम कंज्यूमिंग. Whereas non-probability sampling, they are comparatively less expensive and quicker to conduct. You can conduct it easily, right? Then the next point, that is based on complexity. So your probability sampling is comparatively more complex and requires planning and organization, whereas non-probability sampling, that is comparatively easier or simpler to carry out. Let's see some more points related to comparison. The next is population list. So as we have already seen in the previous point or during the description, so probability sampling requires the complete list of the population, whereas in non-probability sampling, there is no need for such list, right? That is, it doesn't require the complete list of the population. Let's talk about the accuracy. So our probability sampling, it is more accurate and scientific approach, whereas non-probability sampling is comparatively less accurate and it's a subjective approach rather than the scientific approach. Then 11th point, that is randomization. So our probability sampling, it relies on randomization, whereas in case of non-probability sampling, there is no randomization involved. About next point, that is use in research. It is used in order to conduct large scale studies, right? That is, it is ideal for large scale as well as for quantitative studies, right? Whereas non-probability sampling is suitable for qualitative and exploratory research. Moving to next point, that is time. So our probability sampling, it takes more time, right, due to the process involved, right? Whereas our non-probability sampling, they takes comparatively less duration of time. Now let us talk about the 14th point, that is risk of selection bias. So in probability sampling, there is lower risk of selection bias, whereas in non-probability sampling, there is higher risk of selection bias. Example for the probability sampling includes survey research, market research, large population studies, etc. Whereas some of the examples of non-probability sampling which are being used in research studies are case studies, interviews, focused interviews, etc. So that's all, dear students, in our today's video. I hope you have understood the comparison between the probability